हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 67 फ्रॉम द कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हिट द बेल आइकॉन ताकि फ्यूचर कोई भी वीडियोस मिस ना हो। एंड इफ यू हैव मिस्ड आउट द प्रीवियस वीडियोस देन डू चेक आउट द चैनल। पहले की सारे वीडियोस यहाँ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर योर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, फॉर योर स्पेसिमेन क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, इवन द सैम्पल पेपर्स फॉर बोथ ISC एंड CBSE। डू चेक इट आउट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि उनका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाए और उनके डाउट्स तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे। While preparing, while going through the videos, if you come across any doubts, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Without further ado, let's get started with the question. Question 67, ये issue of shares का sum है. We have Sargam Ltd who has invited applications for 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable as follows. Rupees 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and the balance on second and final call. So 2 plus 3 plus 2, this makes it 7, which has been called up. The shares were oversubscribed and all the excess applications received were rejected and the amount duly refunded to the applicants. There were a certain number of shares, या number of shares mentioned नहीं है, on which allotment and first call was not received, and all the shares on which both allotment and call money was not received were forfeited, and these shares were reissued immediately. Final call is not made yet. Extract of cash book is given here. We are required to pass journal entries and also prepare the calls in arrears account. So, pehli entry from the cash book, we can see application money received is 30,000. Then by equity share application 10,000, ये refund है. Allotment में 28,500 मिले हैं, which is calls in arrear है यहाँ पर. Equity share first call में भी 18,400 मिले हैं, rest is calls in arrear. To equity share capital account, this is the reissue amount which has been received. So let's have a look at the journal one by one to understand how this needs to be done. पहली journal entry, बैंक account debit to equity share application account, 15,000 shares पे 2 रुपए per share application money मिले हैं. So 30,000 is the amount which matches with the first cash book entry. Second, equity share application account debit to equity share capital account to bank account. This is the refund of 10,000 and rest is transferred to equity share capital account. तो ये रिफंड का एंट्री भी यहाँ से टैली हो रहा है 10,000 का. Then we have equity share allotment account debit to equity share capital account. This is making the allotment money due 30,000. Then we have bank account debit, calls in arrears account debit to equity share allotment account. 30,000 यहाँ पे allotment money है. 28,500 मिले हैं as per the cash book, as you can see here, 28,500. So rest, the balance is calls in arrear, which is straightforward. 30,000 minus 28,500, 1,500 calls in arrear यहाँ पे हो गए. Then we have equity share first call account debit to equity share capital account. Again, ये भी 10,000 shares पे है. The first call money per share is rupees 2. So 10,000 into 2 is 20,000. This is making the first call money due here. Then we have the receiving of first call money, bank account debit, calls in arrears account debit, जहाँ पे कैश बुक में दिया हुआ है फर्स्ट कॉल पे मिले हैं 18,400. So the balance 1,600 is calls in arrear. 20,000 minus 18,400. 1,600 is the calls in arrear. इसके बाद अब आते हैं फॉर फीचर में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है these shares were forfeited. So equity share capital account debit. Now remember यहाँ पे हमेशा called up value आता है. We are forfeiting how many shares, that you have to understand. Basis that this forfeiture will happen. So अगर यहाँ पे देखोगे वन बाई वन समझ लेते हैं. कॉल्स इन अरियर, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर की थी. 1,500 रुपये हमें नहीं मिले हैं कॉल्स इन अरियर पे. दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 500 शेयर हैं जिन पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिले हैं. सो कॉल्स इन अरियर जो है अलॉटमेंट पे वो 500 शेयर्स पे है. 500 इंटू 3, 1,500 रुपये. कॉल्स इन अरियर जो फर्स्ट कॉल पे है वो 800 शेयर्स पे हैं. 800 इंटू 2 बनते हैं 1,600. और क्वेश्चन में साफ बोला गया है जिन शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी दोनों ही नहीं मिले हैं सिर्फ वही फॉरफिट हुए हैं. दैट मीन्स 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं क्योंकि इन 800 शेयर्स में ये 500 शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं. सो 500 इंटू 2 एंड 300 इंटू 2 टोटल बनते हैं 1,600. इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जब यहाँ पे करोगे यहाँ पे आएगा कॉल्ड अप वैल्यू एंड दैट विल बी फॉर 500 शेयर्स. नाउ रिमेंबर कॉल्ड अप अमाउंट 7 रुपीज है क्योंकि फाइनल कॉल अभी भी नहीं हुआ है.
Called up amount is application money plus allotment money plus first call money, which is 2 plus 3 plus 2, which is 7 rupees. 2 share forfeiture, 2 calls in arrears. Total उसने allotment money और call money, first call money payment नहीं किए हैं, which is 3 rupees plus 2 rupees, 5 rupees. टोटल 5 रुपए उसने नहीं दिए हैं, इसलिए 2500 इज कॉल्स इन अरियर टोटल। और जो बैलेंस अमाउंट है 1000 वो उसने दिए हैं, विच इज नथिंग बट द एप्लीकेशन मनी। समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो दैट दिस इज द मनी रिसीव्ड 500 into 2 which is credited to share forfeiture account here। चले आते हैं अब री इशू एंट्री में। री इशू में बोला गया है साफ साफ दैट दीज शेयर्स वेर री इशूड एंड टोटल री इशू प्राइस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3000। शेयर का फेस वैल्यू है 3500 और ये 500 शेयर अगर 3000 में री इशू हुए हैं दैट मीन्स 1 रुपए का डिस्काउंट ऑन री इशू गया है यहाँ पर, एंड दैट इज वाई discount is debited to share forfeiture account, 1 rupee per share. So the reissue entry is also done. Coming to share forfeiture account, the final entry, coming to the final entry where we transfer the profit. So यहाँ पे सारे शेयर्स रीइशू हुए हैं जितने फॉरफिट हुए थे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था 1000, डेबिट किया 500, सो द बैलेंस 500 will be transferred to capital reserve account. So that is the final entry. Share forfeiture account debit to capital reserve. For your understanding, let's write it here. 1000 minus 500. Journals are done. Let's have a look at the calls in arrears. पहली जर्नल एंट्री कॉल्स इन अरियर फर्स्ट अपीयर हुआ था शेयर अलॉटमेंट में, जहां कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ था। सो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1500। Then calls in arrear came into picture in share first call. So calls in arrear account debit to share first call account 1600. ये दोनों is a ledger posting from the journals. This one as well calls in arrear then credit हुआ था during equity share forfeiture. The forfeiture journal this one. So buy equity share capital account 2500 and the remaining calls in arrear 600. This is for the shares which are not forfeited yet. The remaining 300 shares उसका ये बैलेंस सीडी में रह जाएगा as 600। So these are the journals and the ledgers। कोई भी अगर डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई हेल्प यू आउट। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके डाउट्स भी तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करें। एंड स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि वीडियोस मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।